हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेक्शन 3 के फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, इन विच वी वर गोइंग टू डिस्कस about the 1830 July Revolution in France, and then we will be discussing about the Greek War of Independence. अपनी पिछली वीडियो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की हमारी जो लास्ट वीडियो थी, जिसमें मैंने आप लोगों से ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि एक कंजर्वेटिव ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। वो कंजर्वेटिव ऑर्डर जिसके थ्रू ये कोशिश की गई कि फ्रांस फ्यूचर में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन न कर पाए और पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव रिजीम्स, conservatives actually those who were basically wanted to preserve the traditional institutions of society and politics, जो society और politics के traditional institutions को preserve करना चाहते हैं। और इसलिए यूरोप के different parts में conservative regimes को establish किया गया। ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी, दे वर ऑटोक्रेटिक इन नेचर और ऑब्वियसली दे कुड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट टू देयर डिसीजंस और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू बी रेज्ड ओवर देयर अथॉरिटी और द लेजिटिमेसी। इन कंजर्वेटिव रिजीम्स ने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज को इंट्रोड्यूस किया और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लिबरल्स दे वेंट अंडरग्राउंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेवोल्यूशनरीज। यानी कि अगर हम 19th सेंचुरी के शुरुआत में हम देखते हैं तो एक बेसिक चीज हमको देखने को मिलती है, दैट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म it was getting associated with the spirit of revolutions। ये revolutions के साथ जुड़ती चली गई यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में। बेसिकली अगर आप इटालियन या जर्मन रीजन्स की बात करें या ऑटोमन एम्पायर के स्टेट्स की बात करें या आयरलैंड की बात करें, एवरीवेयर यू कुड फाइंड कि हमारा जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था ये हमारा रेवोल्यूशन की स्पिरिट के साथ जुड़ता चला गया। देयर वर रेवोल्यूशंस इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप और इन रेवोल्यूशंस को बेसिकली लीड कर रहे थे लिबरल नेशनलिस्ट। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, among them were basically the educated middle class elite। educated जो मिडिल क्लास के एलिट ग्रुप थे वो इसमें शामिल थे और ये एजुकेटेड जो मिडिल क्लास था इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और साथ में businessmen, industrialists, they were also included in this। तो सबसे पहले जो रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, इस पीरियड में रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, दैट इज द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 in France।
what happened here, यहां पर actually क्या हुआ, the liberal nationalists, they carry out a revolution and removed the monarch, the conservative monarch, who was belonged to the Bourbon dynasty, and in his place a constitutional monarchy was established under लुई फिलिप. तो यहां पर बेसिकली अगर हम देखते तो 1815 का जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, उसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि फ्रांस के अंदर बोर्बो डायनेस्टी को फिर से पावर में रिस्टोर कर दिया गया था. वो बोर्बो डायनेस्टी जिसको ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन फ्रांस ओवरथ्रो कर दिया गया था. तो व्हाट हैपेंड हियर, द किंग ऑफ बोर्बो डायनेस्टी who was restored to power by the treaty of Vienna was overthrown. And what was happened there? The constitutional monarchy was established with Louis Philippe as its head. यानी कि जो बोर्बो डायनेस्टी के रूलर था, जिसको रिस्टोर किया गया था पावर में बाय द ट्रीटी ऑफ वियना, उसको रिमूव कर दिया गया, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया और उसकी जगह पर फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया, राइट, अंडर लुई फिलिपी. लुई फिलिप was now the new constitutional monarch in France. Duke Metternich, he made a remark over this incident. When France sneezes, the whole of Europe catches cold. ये रिमार्क था किसका? ड्यूक मैटरनिक का. If you remember, Duke Metternich, he was the Chancellor of Austria and was leading the conservatives. Actually, he meant to say that even a small incident which took place in France had the power to influence the people all over Europe. यानी कि फ्रांस के अंदर एक छोटी सी घटना भी अगर वहां पर होती है तो पूरे यूरोप पर इसका इंपैक्ट होता है, पूरे यूरोप के लोग जो हैं वो इससे इंस्पायर होते हैं. His words came true when a revolution, an uprising took place in Brussels, and this uprising led to the separation of Belgium from the United Kingdom of Netherlands. So this was what happened, that an uprising took place
in Brussels, which led to the separation of Belgium from the United Kingdom of Netherlands. बेल्जियम जो है, जिसको बाय द ट्रीटी ऑफ वियना नीदरलैंड का पार्ट बना दिया गया था, तो वो बेल्जियम नीदरलैंड से सेपरेट हो गया, ठीक है, बाय दिस रेवोल्यूशन. सो व्हाट ड्यूक मेटरनिक सेड, remark, that remark came true. His words came true when an uprising took place in Brussels, और इस uprising का end result क्या हुआ? That Belgium got separated from the United Kingdom of Netherlands. Now, the event that had mobilized, that it inspired the nationalistic feelings across Europe, the most important was the Greek War of Independence. यानी कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो इवेंट था, वो इंसिडेंट था जिसने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को पूरे यूरोप में मोबिलाइज किया. एक्चुअली ग्रीस was the part of the Ottoman Empire since 15th century. यानी कि 15वीं शताब्दी से, 15th सेंचुरी से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था. द स्प्रेड ऑफ revolutionary nationalism during this period had inspired the Greeks to start their struggle for their independence. So, what happened here is spread of revolutionary nationalism inspired the Greeks to start their struggle for independence in 1821. Now, when this struggle was started, the Greeks who were living in exile, they had supported. That means the Greek revolutionaries, they had got the support of other Greeks who were living in exile, जिनको देश निकाला दिया जा चुका था, जो एक्साइल में रह रहे थे, उन लोगों ने ग्रीक रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट किया. टुगेदर विद दैट, many of the West Europeans who had respect for the Greek culture and praised
the Greek civilization as the cradle of the European civilization, they had also supported. यानी कि यहां पर ultimately what happened? The Greek revolutionaries got support from the Greeks living in exile as well as many people in West Europe who had sympathies with ancient Greek culture, जिनका एंशियंट ग्रीक कल्चर में सिंपैथी थी, जिनके साथ उनका एक जुड़ाव था, एक इमोशनल जुड़ाव था. What happened? They praised Greek civilization as cradle of the civilization in Europe. उनका ये मानना था कि यूरोप में जो सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, दैट वाज फ्रॉम ग्रीस ओनली. These people had even mobilized the people in other parts of Europe as well. And here, the English poet, the famous English poet Lord Byron had even went to fight the war and died due to high fever in 1824. What happened at the end? Finally, the Treaty of Constantinople was signed, that recognized Greece as an independent country, independent nation in 1832. And this was how Greece had also emerged as an independent nation by the Treaty of Constantinople in 1832. Whatever we had discussed, हमारे यहां से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं. पहला, state the main features or the outcome of the July 1830 revolution in France. One. Second question जो आपका बन सकता है, that is based on the remark made by Metternich
That was when France sneezes, the whole of Europe catches cold. इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस, तो वहां पर आप मेंशन करेंगे कि उसका मतलब क्या था, what he meant to say, that even a small incident that took place in France could have a deep influence over the whole of Europe. And then you will be mentioning about a small uprising which took place in Brussels that led to the separation of Netherlands that from Belgium, or you can say the Belgium from Netherlands. And then another question that was, write a short note on the Greek War of Independence. Then 1 mark question you can have, name the English poet who had supported the Greek War of Independence and went to fight over there. Then you will be asked the significance of the Treaty of Constantinople. So these are some of the important questions which are related to this particular topic which we had discussed. In my next video, I will be discussing about the Romanticism. Right? So this was all about this video. आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? Please share your views in the comment box. If you have still not subscribed my channel, please subscribe my channel Incredible Scholar, and don't forget to push the bell icon so that you can get the latest updates about the video uploads. Thank you and have a learning day.